Hello friends, welcome back to another video, and today we have a very special guest Sanchit Bhai. And so first of all, how are you, Sanchit Bhai? Good, Sad. Really excited to be talking about Indian cricket. Obviously, it hasn't been a good start to the year, but there are lots of points to be discussed. So, thanks for having me, Sad, and looking forward to the discussion. So first of all, we all know we all are disappointed from a historic series became a disaster series for us. So how do you define, Sanchit, by this series? We lost, we South Africa whitewash in ODI series, and a terrible performance from India in Test series as well. How do you define? Well, Sad, if I had to describe this entire South African tour in one word, I would just say that, no, in two words for that matter, I would say it as missed opportunity. So there was a lot at stake before the start of the series, and we all expected India to create history by winning our first ever Test series in South Africa, and it was good according to the plan till the first Test match ended. But after the second Test match, I think it all went downhill. But you have to give credit to South Africa. They really bounced back after the centurion defeat, and we were completely devastated after the second and third test match. We could not recover ever since South Africa chased down the target in the second test match. So really disappointed because we really could have managed to win it even after losing the second test match. There were lots of issues that was present in the middle order, and also we didn't bowl well according to our expectations. So it really feels like a missed opportunity, and it got from bad to worse when the ODI series began. And really disappointed as an Indian cricket fan, because we all thought that this could be the start of a new era. But I really don't Yes. mind losing 3-0. I really don't mind even if we lose all the bilateral series that is to come. But we should gain something from it. But according to me, I didn't see any kind of improvement. I still felt that we are still playing that outdated brand cricket in limited overs format, and that costed us eventually in this series. Yes, and there is lots of going in outside in dressing room, BCCI controversy. There is lot to talk about. So first of all, how do you see, Sanchit Bhai? First, there are many points to talk about if in this series lost. So first of all, our middle order. If we see from, I think from WTC, Chiteshwar Pujara and Ajinkya Rane hasn't scored anything, any runs. I think 20, 15 runs. That how do you see them? Actually, I didn't get your question because your video was freezing at the end. But I think the question is about Cheteshwar, Pujara, and Rahane, right? Yes, yes. Yeah, so very disappointing performance from both of them. I really felt that this could have been the series where they actually redeemed themselves, but according to me, they didn't do any justice to their selections. Yes, they batted well in the second Test match, but we eventually lost that. But I still felt that we have to move beyond Cheteshwar Pujara and Rahane, and this series loss. I think the main reason why we lost this series is not because of our bowlers, but I think that middle order. So we all suspected the middle order to be very fragile, and this was the series when we completely got exposed. Kohli was amongst the runs. That was one of the positives that I'll take from the test series, and even Pant got a brilliant 100 in the third test match. But Yes. apart from that, still once again number 3 and number 5 position, this has been a problem ever since 2019, and it really got us exposed. So I really want us to at least go beyond Pujara and Rahane in the future. Maybe try out someone else. Iyer was amongst the mix after scoring 100 on debut, so he can be brought back at number 5. And even there is Hanuma Vihari, who played well in the domestic circuit. Maybe he can be tried at number 3. He did bat in the top order against Australia in 2018. So I really want to see new faces being tested at number 3 and number 5. Just give them an opportunity and find out a way how we can go beyond this conundrum of number 3 and number 5. But overall, really disappointed with how both of them played. Yes, and we look in as well in ODI series, there was no intent versus spin. If we look to stats, Ashwin and Uzi both have picked 3 wickets, and whole South African spinners have took almost 10 plus wickets. How do you see them? Well, very disappointed. I thought that after the last series that we won in South Africa in 2018, our main stars were our spin bowlers. Yuzvendra Chahal and Kuldeep actually won us
that series on their own hands. Yes, Kohli also played brilliantly, but this time around, I think our spinners were completely below par. I mean, their part-time bowler, Aiden Macram, bowled better than our spinners. So that should tell a story itself. Very disappointed with Ashwin's return to ODI cricket. I thought that he could have had a point to prove, but he really didn't look threatening at all. With UZ, I think he did bowl well at times. There were instances where he got the ball to turn quite a lot, but the only problem with UZ is that he becomes predictable at times. So South African batters, I think they managed to figure him out pretty quickly. So it really got from bad to worse, as I said in the ODI series. I really feel that Yuzvendra Chahal is that type of a bowler who works well when he has a partner with him. So his Yes, successes in limited overs cricket had yes, been evident when he bowled well with Kuldeep Yadav in those days. So till the time we find a suitable partner for Yuzvendra Chahal, I don't think we can get the most of him. So really disappointed with our spinners. I hope to see a better performance in the upcoming ODI series. I want to see lots of new names also in the squad. I would love to see someone like a young player like Ravi Bishnoi in the mix, and even Rahul Chahar can be tried out since spinning options hasn't really boiled down. But when you talk about this series, it really was disappointing. and if we look to our batters also, there was no intent versus spin. How do you see them? Because I think we were defending Markram, and he was not a prime spinner. He was just a trial one. So how do you see? I think the problem with India facing mainly off spinners has been really evident ever since the last 3 or 4 years. Even Virat Kohli, even though this is his best format, he still finds ways to get out to an off spinner. So it was really disappointing on how we batted We have against spinners, seen it especially in home in England. Yes, yes, exactly. against Moeen So Ali. this Yes, exactly, Moeen Ali indeed. So this really is frustrating because India is known to be a country who plays spin the best. So it really was very disappointing to see us batting like this, and especially when someone like Aiden Makram. I mean, no disrespect to him, but he is a yes, part timer. I think we should have approached facing Makram in a more positive way in this series, but we didn't. I mean, we played him defensively, as you rightly pointed out. I think that is not the way how you play ODI cricket. That is why at the start I said that we really play an outdated brand of ODI cricket. I think that needs to be changed. I really like how Pant played in ODI number 2 when he scored, I think, 80 odd runs. He really attacked the spinners well, and I think that got us to a good score. Even eventually we lost, but I think we did well in that middle over phases as compared to the first and third match. I really want to see more of those things. I want us to attack the opposition spinners yes, more because that is the yes. only way we will dominate Very less. in Yes, this particular format. yes. And Sanchit Bhai, if you look, we haven't played ODI since I think 1 year because we have played I think last full unit in Australia in home. I think with England we haven't played a full strength team. Bumrah were missing, Jadeja were missing, Shami were missing. So this was also a concern that to play with a unit. Exactly, yes, and it really was weird. I mean, we last played an ODI match. I think it was against Sri Lanka in July when we won 2-1, Yes, but it was a yes, completely different yes, squad. I mean, hardly yes, Dhawan and yes. one or two players were there, but our full strength squad. I think this was the first time we played our full strength squad Yes. since January, I guess, against England, if I'm not wrong. No, in England also some main players were missing. Jadeja, Yeah, yeah, Bumrah, yeah, Shami. correct. So I basically, think 1 year in gap. Australia, from Australia. Exactly. I So think the from chopping Australia. and changes. मतलब हर एक player अलग Yes. अलग series में आते गया. So it Yes. doesn't really help. I mean, in ODI cricket, you know that India is going to play very less ODI cricket even in this year because obviously we got the T20 World Cup coming in. So I really would have liked consistency in our squad selection. So maybe that is also a reason why a team doesn't gel together well. But even apart from that, I really felt that we had a missed opportunity. As I said, even if we lost 3-0, it would have still been okay if we actually found our solutions to particular problem. I mean, before the start of this series, our main problem was to identify कि all-rounder कौन होगा in place of Hardik Pandya. Yes. But Venkatesh Iyer को select किए, he didn't even ball in the first two matches. Hardly five overs he balled, and then third match में उसको drop कर दिया. So
समझता ही नहीं है कि बेसिकली व्हाट द टीम सिलेक्शन इज रियली इम्प्लाइंग. सो वी रियली डिडंट मेक आवर जॉब्स इजियर. आई थिंक वी मेड इट फ्रॉम बैड टू वर्स इन द ओडीआई सीरीज. मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वक्त वी इवन ओपनड अप प्रॉब्लम लाइक 2 or 3 more problems. So it really just didn't make sense of how we approach this series. एंड आपने सही बोला कि टीम सिलेक्शन के बारे में. अगर हम वर्ल्ड कप से देखें, T20 वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती को सिलेक्ट किया गया था, राहुल चहर को सिलेक्ट किया गया था, यूजी को नहीं किया गया था. उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई. लेकिन जब आपने ये वरुण चक्रवर्ती को सारे मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड कप मैचेस खिलाए, अभी वरुण चक्रवर्ती कहाँ है किसी को मालूम नहीं. तो मेरा यही क्वेश्चन है कि सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन कोई सही नहीं है. और वर्ल्ड कप में अगर आप राहुल चहर का देखें तो वो आई थिंक लास्ट मैच उनको खिलाया था. उसके बाद अभी वो टीम में है, आपको मालूम ही नहीं है. सो दिस Exactly. वाज द And क्वेश्चन अराइजेस. yeah, and Saad, the problem is that कि ये जो problem है about selection, it has been seen like मतलब बहुत सालों से ऐसे हो रहा है. इवन बिफोर द 2019 वर्ल्ड कप, इफ यू रिमेम्बर, नंबर 4 पे हमने राइडू को 1-2 साल तक खिलाया था. यस, ही यस, डिड वेल ऑल्सो, यस. 50 का एवरेज कुछ तो था. बट राइट बिफोर द वर्ल्ड कप वी ड्रॉप्ड हिम बिकॉज ही हैड अ पुअर सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम. देन उसके बाद ही गॉट ड्रॉप. वी प्लेड विजय शंकर एट नंबर 4. देन उसके बाद विजय शंकर ऑल्सो गॉट इंजर्ड एंड देन वी प्लेड पंत. सो लॉन्ग टर्म विजन तो दिख ही नहीं रहा है व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टर. एंड वेरी सॉरी टू इवन से दैट कि ये टाइम भी मुझे सेम लग रहा है. लाइक अभी तो मतलब दिख ही नहीं रहा है कि कोई मतलब जो प्लेयर्स हु वी थॉट कि दे विल बी प्लेइंग इन द 2023 वर्ल्ड कप दिख ही नहीं रहा. यू राइटली सेड अबाउट वरुण चक्रवर्ती. वी थॉट दैट कि वरुण चक्रवर्ती अगर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं देन ही डेफिनेटली विल बी प्लेइंग इन द इंडियन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट. बट दिख ही नहीं रहा है. इवन विथ राहुल चाहर he wasn't even selected. मतलब युजवेंद्र चाहल को तुमने ड्रॉप किया, लीडिंग विकेट टेकर इन यूएई इन द लास्ट आईपीएल. उनको ड्रॉप किया, वर्ल्ड कप नहीं खेला, एंड नाउ ही इज बैक इन द ओडीआई टीम. मतलब लॉजिक ही नहीं समझता व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन. सो इट रियली, इवन एज अ फैन हम एनालाइज नहीं कर सकते कि नेक्स्ट सीरीज में कौन आएगा, कौन ड्रॉप होगा. सो आई थिंक क्लैरिटी रहनी चाहिए सिलेक्टर्स की. इवन थोड़ा सा विजन रहना चाहिए कि अगर ये प्लेयर को तुम लोग खिला रहे हो then क्यों खिला रहे हो. and even if he fails you should keep on backing because he is amongst your plans for the main world cup. So I think वो नहीं दिख रहा है with BCCI selection. एंड संचित भाई, आपने वेंकटेश अय्यर की बात की. मतलब वेंकटेश अय्यर को सबसे पहले आपने सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था. आपने 7 मैचेस के बेसिस पर सिलेक्ट किया, स्क्वाड में रखना चाहिए था. आपने सीधा उनको प्लेइंग 11 में खिला लिया, 2 टेस्ट मैच खिलाया. और आप हार्दिक पांड्या का ऑलराउंडर ढूंढ रहे, मतलब हार्दिक पांड्या जैसा रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे. लेकिन आपने बॉलिंग भी उनको आई थिंक सेकंड ओडीआई मैच में कराई थी, वो भी लास्ट के 2-3 ओवर्स, ज्यादा नहीं. और थर्ड ओडीआई मैच में आपने उनको ड्रॉप कर दिया. तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है. तो हाउ डू एग्जैक्टली एंड वेंकटेश अय्यर के बारे में तो जो दूसरे मैच में उन्होंने बॉलिंग डाली थी उनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग दी थी. यू डोंट सी यस, योर यस. सिक्स बॉलिंग ऑप्शन बॉलिंग इन डेथ ओवर्स. मतलब कुछ प्लान ही नहीं था. आई थॉट कि मे बी मिडिल ओवर्स में उनको बॉलिंग करा देते. आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर. इवन इन द फर्स्ट मैच व्हेन ही डिडंट बॉल आई फेल्ट कि ही कुड हैव बॉल्ड बेटर. मतलब शार्दुल ठाकुर 10 ओवर में कुछ 71 रन उन्होंने दिए. आई थिंक शार्दुल के अगर 2-3 ओवर वेंकटेश अय्यर भी डाल लेते आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर. तो it really didn't make sense how we really used Venkatesh Iyer. But मतलब सेम वही प्रॉब्लम हुआ कि अगर ऑलराउंडर खिला रहे हो उसको प्रॉपरली यूज करो. तो it doesn't make sense. Like if you are only playing Venkatesh Iyer as a proper batter at number 6, it doesn't make sense. I mean उस अगर सिर्फ बिकॉज बैटर ही ही खिलाना ओपन. है then yeah, अगर सिर्फ बैटर ही एंड खिलाना है then there are lots of options. Yeah, yes. And he opens in IPL as well. I think exactly. in Vijay Hazare he played at number 4 or number 5. So I don't think it makes sense to play him at number 6. Exactly, and finisher, I really didn't even see Venkatesh Iyer as a finisher. I just thought कि मतलब हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है तो कोई हार्दिक जैसा रोल खेले इसलिए वेंकटेश अय्यर को खिला रहे हैं. I don't see that as a possible solution. मतलब ये शॉर्ट टर्म ऑप्शन ही हो गया. So basically it just says कि जब हार्दिक पांड्या वापस आएंगे he is definitely going to come back into the team because Yes, इंडिया yes, और कोई ऑलराउंडर को खिला नहीं रहा है. मतलब ऋषि धवन has yes. also had a good domestic season. I think we could have even tried out different kinds of player at number 6, but अभी तो वही दिख रहा है कि once हार्दिक पांड्या gets fit to ball those overs, he is coming back into the team. So वेंकटेश अय्यर फिर से I think बलि का बकरा बन के उनको टीम के बाहर जाना होगा in the coming years.
And Sanchit Bhai, if we look to Ravichandran Ashwin, then there was a big surprise when he was selected in T20 World Cup squad. Definitely, he has done a very well. His World Cup was good, quite good. But direct from T20 to ODIs, how do you think? How do you think? आई थिंक विद T20 वर्ल्ड कप साथ हमने भी बात की थी जब इंडिया की स्क्वाड के बारे में Yes, हमने yes, डिस्कस किया था वर्ल्ड yes, कप के बाद, तो मैंने एक पॉइंट कहा था कि द ओनली रीजन वाई अश्विन वाज सिलेक्टेड बिकॉज सुंदर तभी इंजर्ड थे एंड अनअवेलेबल थे, तो सुंदर के लिए बैकअप वॉज डायरेक्टली अश्विन। एंड हमारी स्पिन बॉलिंग काफी वीक थी उस टाइम पे भी, तो वी रियली नीडेड yes, समवन हु हैज एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्मेट, तो इसीलिए वी वेंट विद अश्विन। इट वाजंट अ रॉन्ग मूव टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई रियली वॉज सरप्राइज, मतलब जैसे आपने कहा कि ओडीआई स्क्वाड में अश्विन का आना, इट वाज रियली सरप्राइजिंग बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत थे। राहुल चार वाज yes, देयर, वरुण चक्रवर्ती भी थे, मतलब आजू बाजू में, तो वी शुड हैव प्लेड समवन एल्स इन प्लेस ऑफ अश्विन, बिकॉज अगर आप ओडीआई में खिला रहे हो मतलब इट इनडायरेक्टली मीन्स कि आप 2023 के बारे में उनके बारे में सोच रहे हो। बट अकॉर्डिंग टू yes. मी पर्सनली आई रियली लाइक अश्विन, बट आई डोंट सी अश्विन प्लेइंग इन द 2023 वर्ल्ड कप बिकॉज एक बहुत बहुत से पैरामीटर्स है। आई रियली वांट टू सी समवन एल्स प्लेइंग इन दैट स्पिन बॉलिंग रोल, मतलब बहुत से Yes. ऑप्शंस है। अकॉर्डिंग टू मी आई रियली वांट टू सी रवि बिश्नोई being playing more matches in place of Ashwin for that matter, because जडेजा जब वापस आएंगे he is definitely going to be in the team, तो दो ऑफ स्पिनर्स खिला के कुछ मतलब नहीं है, तो it doesn't make sense for Ashwin to be playing in the ODI format at this moment, because Jadeja once he comes back he is definitely going to be there, but उसके अलावा you need a wrist spinner also, तो Ashwin doesn't really do well in ODI अभी, तो recently he didn't have a good ODI series also, तो even I was surprised कि मतलब क्यों खिलाया गया उनको, तो maybe we could try out younger players in the upcoming series. And Sanchit Bhai, you have seen ODI series. Then KL Rahul was opening. I was very surprised with this decision because he was playing at number 5. And now in West Indies series, when Rohit Sharma comes in, then KL will be playing at number 5. So the better option would have been that they would have given chance to Ruturaj Gaikwad. So Yes. I was very disappointed from KL Rahul how he takes the decision. Perfectly put up, because even I thought कि मतलब जब स्क्वाड अनाउंस हो गई थी and Rohit Sharma wasn't there, even we all thought कि yes, Ruturaj is in the team, he is definitely going to get all the 3 matches, because obviously you can't drop Shikhar Dhawan, he only plays this one format and he has been doing really well in ODI cricket since 2019, and उन्होंने he also had a great series in South Africa also, so शिखर धवन तो मतलब अनड्रॉपेबल है। बस बात ये आती है कि ओपन कौन करेंगे उनके साथ, अभी रोहित शर्मा जब वापस आएंगे obviously is going to open, Of so course, I yes. also Yes. thought कि ऋतुराज को ट्राई आउट करते, देन थोड़ा सा हमें फ्यूचर के भी बारे में सोचना पड़ता है। इफ ऋतुराज प्लेड ऑल द 3 मैचेस, इफ ही हैड अ गुड सीरीज, देन वी वुड हैव सेड कि अरे हाँ, मतलब हमारे पास बैकअप भी है, अगर इवन इन केस कुछ हो जाता है राइट बिफोर द वर्ल्ड कप टू समवन लाइक धवन और इवन रोहित शर्मा, देन वी हैव ऋतुराज गायकवाड अमॉन्ग्स द मिक्स, तो Yes. इट आई फेल्ट अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अ बैड मूव टू प्ले केएल राहुल एट द टॉप, बिकॉज नंबर 5 पे अगर उनका स्टैट्स देखे, 10 इनिंग्स खेले हैं, ही हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 113 at number 5 with Yes. an average of 50, but अगर ओपनिंग में उनके And स्टैट्स देखे yes. Yes. उनकी स्ट्राइक रेट Yes. 80s में है, तो it Yes. it doesn't make sense for him to open the innings, because his record is better at number 5 than opening the innings, so I felt that was a bad move from the selectors. And Sanchit Bhai, in last home series against England in ODI in Pune, I think Kale scored a century at Yeah, number 5. Number 5. So it was very disheartening. So exactly, तो Sanchit number Bhai, 5 पे yes, yeah, yeah. yes. Hey. नहीं, I was just saying कि number 5 is actually his best option. तो we should have actually played him at number 5 all the three matches. ऋतुराज को opening खिलाते, I think that would have been better. Even if he lost the series, वो करने के बाद भी it would have been okay. But at least हमें फिर उतना आइडिया रहता कि नंबर 5 फिक्स है एंड ओपनिंग्स ऑर्डर फिक्स है। अभी फिलहाल वी स्टिल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कि मतलब केएल अभी once again he'll go back to number 5, then one of Then, Iyer or Surya Kumar Yadav will be dropped, because Pant तो obviously he won't be dropped, so he's going to bat at number 4. So one of Surya Kumar Yadav and or Shreyas Iyer will be dropped. That's for sure. and Sanchit Bhai, I had a question that why it comes when अगर अभी हम ट्राई कर रहे हैं और जब वर्ल्ड कप आता है तब अचानक से कोई नया फेस आ जाता है। अभी जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा, वरुण चक्रवर्ती को आपने ट्राई टेस्ट कुछ भी नहीं किया, सीधा उनको T20 वर्ल्ड कप खिला रहे।
राहुल चहर, ऐसा क्यों? मतलब आई हैड अ क्वेश्चन. इट्स सो मतलब अभी तो मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए इंडियन फैन, लाइक एज आई सेड ये तो प्रॉब्लम मतलब 2-3 सालों से ही चलते आ रहा है. आई रियली फील कि वी शुड हैव लाइक अ स्ट्रक्चर्ड प्लान कि अभी से ही यस. डिसाइड करना चाहिए कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कौन खेलने वाला है. इवन इफ यू कीप लूजिंग द सीरीजेस इट्स ओके. मैं ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लेता हूँ, लाइक इट्स अ T20 फॉर्मेट बट स्टिल आई थिंक द एग्जांपल यस. रिमेन सेम. T20 वर्ल्ड कप दे रिसेंटली वन इट इन यूएई. बट उसके पहले अगर एक साल से उनका रिकॉर्ड देखे, दे हैड द वर्स्ट विन परसेंटेज. कुछ 39% उनका विन था. दे लॉस्ट सीरीज इन बांग्लादेश, दे लॉस्ट इन वेस्ट इंडीज. बट द बेस्ट थिंग दैट दे डिड वाज उन्होंने जो भी स्क्वाड सिलेक्शन की थी ये सब सीरीज में, इवन दो they didn't have Smith and Warner for most of the bilateral tours, but यस. they actually kept a plan कि उनको मतलब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा था कि मिचेल मार्श को हमें नंबर 3 पे खिलाना है. नो मैटर व्हाट हैपेंस, इवन इफ वी लूज द सीरीज, नंबर 3 हमें आइडेंटिफाई करना है. तो इवन इफ स्मिथ कम्स बैक, वो नंबर 4 पे आ जाएंगे. तो दे केप्ट Mitchell Marsh at number 3 and it delivered in the World Cup and that eventually got them the World Cup success. So I felt कि even we should do this. तो bilateral series, even if we lose all these Paytm trophies and everything, अगर एक proper structure रहेगा कि 2022 के वर्ल्ड कप में इनको इसको खिलाना है, 2023 के वर्ल्ड कप में इसको खिलाना है, देन आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर अस ऑल्सो. वरना फिर से यही होगा कि वर्ल्ड कप के 1-2 महीने पहले वी विल हिट द पैनिक बटन एंड किसी और को खिला देंगे. एंड अगर वो परफॉर्म नहीं यस. करता है देन बलि का बकरा बना के उसको टीम के बाहर रख देंगे. यस. एंड संचित भाई, हम ये 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से देख रहे हैं कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी से ही टॉप ऑर्डर हमारा है, रोहित, धवन, विराट. तो ये जब टीम परफॉर्म करते हैं तभी हमारी टीम जीतती है. आप अगर वर्ल्ड कप में भी देखोगे तो रोहित शर्मा ने इतनी सेंचुरियां लगाई, इसलिए मतलब हम इतने सक्सेसफुल है. और जब हम न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल में फंस गए, तो फिर आपको मालूम है मतलब हमारा मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर. How do you think? एग्जैक्टली मतलब इंडिया का द मेन वीकनेस इज आर मिडिल ऑर्डर, नो मैटर एनी फॉर्मेट. तो तीनों फॉर्मेट में देखे अपना मिडिल ऑर्डर की वजह से वी आर लूजिंग द गेम. इवन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, इफ आर मिडिल ऑर्डर बैटेड वेल, वी कुड हैव एटलीस्ट ड्रॉन दैट गेम. एंड इवन इन Yes, द लिमिटेड ओवर्स वर्ल्ड कप, आई थिंक 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वाज द वर्स्ट place our collapse could have happened because पूरा वर्ल्ड कप yes, our top 3 परफॉर्म. धवन जब इंजुरी से पहले उन्होंने सेंचुरी मारी ऑस्ट्रेलिया के सामने. KL also scored a century against Sri Lanka. रोहित का आई थिंक मेमोरेबल वर्ल्ड कप था, 6 सेंचुरीज इन दैट phenomenal. वर्ल्ड कप. Yes, एंड कोहली ऑल्सो 650s बैक टू बैक उन्होंने मारे. तो टॉप 3 की वजह से वी केप्ट ऑन consistently. विनिंग. Yes, तो मतलब यही डर था कि अगर व्हाट इफ ऑल द 3 प्लेयर्स फेल इन अ मैच, तो कौन बचाएगा. तो अनफॉर्चुनेटली फॉर अस सेमीफाइनल में वो हुआ एंड आर मिडिल ऑर्डर गॉट एक्सपोज. तो फिर से आई थिंक आई स्टिल फील दैट इंडिया इज ओवर डिपेंडेंट ऑन टॉप 3. तो even in this series we saw India losing the matches from being 150 for 2, 150 for 3 and then collapsing like yes, 230 to 40 पे हम लोग कोलैप्स हो जाते थे. तो इट रियली डजंट मेक सेंस. तो आई थिंक कि आगे के सीरीज जो भी रहेंगे, वी शुड टेस्ट आउट प्लेयर्स फॉर दैट मिडिल ऑर्डर रोल. तो एज यू सेड कि मतलब KL राहुल नंबर 5 पे है तो उनको नंबर 5 पे ही खिलाओ. इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने सेंचुरी मारी पुणे में, yes, अच्छे खेले थे नंबर 5 पे, फिर क्यों उनको ओपनिंग कराना है आपको. तो मिडिल ऑर्डर को आई थिंक वी शुड आइडेंटिफाई. पंत ने अभी अच्छा किया, कीप बैटिंग पंत एट नंबर 4. इवन इफ ही फेल्स कभी ना कभी तो मतलब उनको स्टेबल पोजीशन दोगे तो ही विल परफॉर्म. तो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 आई थिंक वी शुड कीप ऑन मेकिंग इट स्टेबल. मतलब बहुत टाइम है अभी भी वर्ल्ड कप के लिए, दोनों वर्ल्ड कप के लिए, T20 एंड ODI yes, वर्ल्ड कप. yes. तो आगे के जो भी सीरीज रहेंगे वी शुड आइडेंटिफाई कि मिडिल ऑर्डर में कौन रहेगा, देन ओनली इट इज गोइंग टू मेक आवर केस बेटर. And Sanchit Bhai, I was quite disappointed from Iyer, Shreyas Iyer, because if you look at him from Australia tour, he was मतलब वो आउट हो रहा था शॉर्ट बॉल पे. कोई शॉर्ट भी आ बॉल. रहा है उसको शॉर्ट बॉल डाल रहा है और फिर वो आउट हो रहा है. हाउ डू यू सी? मतलब अभी ये तीनों ओडीआई में ऑलमोस्ट वो शॉर्ट बॉल पे ही आउट हुआ है. एग्जैक्टली, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. आई मीन जब साउथ अफ्रीका की स्क्वाड सिलेक्ट हो गई, सिलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था, इवन इन टेस्ट फॉर्मेट बहुत से क्रिटिक्स ने भी यही कहा था कि दे वुड प्ले रहाणे ओवर अय्यर बिकॉज रहाणे प्ले शॉर्ट बॉल वेल देन अय्यर, बिकॉज अय्यर का वीकनेस इज शॉर्ट बॉल एंड इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया यू विल बी एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ शॉर्ट Yes, शॉर्ट yes, डिलीवरीज. तो इट रियली आई थॉट कि मतलब ओडीआई सीरीज में ही विल डू बेटर. बट फिर से दोस डिसमिसल्स, आई थिंक इट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग. बट when you look at it from मतलब अगर अय्यर के बैक एंड से अगर सोचे, he also wasn't given a fixed position. तो अगर उनको एक पोजीशन पे खिलाते शायद वो उतना इनसिक्योर नहीं होते जैसे ये सीरीज में थे. आई एम नॉट सेइंग कि
just because he was not played at one particular position, he failed. Yes, it was a disappointing tour for Iyer, but for Iyer's sake, I think अगर एक पोजीशन पे उनको खिलाते and पूरे 3 मैचेस देते, then it would have been better. Then at least हमें आइडिया आता कि अगर नंबर 4 पे उनको तीनों मैचेस खिलाते हैं, for that matter, if he failed all 3 matches, then we would have said कि हाँ, we tried him out. Unfortunately, it didn't work out well, so he is going to get replaced by the likes of Pant और सूर्य कुमार यादव. But उनको हमने एक फिक्स पोजीशन दिया ही नहीं. कभी नंबर 4 पे आते, कभी नंबर 5, कभी नंबर 6, कभी तो टीम के बाहर भी रख दिए थे. तो यही प्रॉब्लम है इंडिया की, वी डोंट गिव अ पर्टिकुलर लॉन्ग रन टू प्लेयर्स, एंड उसके वजह से उनकी कॉन्फिडेंस की वाट लगा देते हैं, एंड द प्रॉब्लम्स कीप्स रिपीटिंग. तो अय्यर के लिए इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग टूर, बट नॉट कंप्लीटली because of him, but also I think we really treated Iyer wrong in this series. And Sanchit Bhai, in power plays, our wicket is not, मतलब हमको विकेट नहीं मिल रही इन पावर प्लेज, मतलब बहुत सारे, मतलब अगर आप स्टैट्स देखें 2-3 साल से तो. एग्जैक्टली, एंड बुमराह, एक स्टैट मेरे को याद है कि बुमराह ने फर्स्ट टाइम पावर प्ले में विकेट लिया एवर सिंस 2019. तो 2 साल में मतलब पावर प्ले में विकेट लेना, इट रियली इज वरिंग. तो लिमिटेड ओवर्स में हमारी जो बॉलिंग है, स्पेशली आवर पेस बॉलर्स हैजंट बीन अप टू द मार्क इन द लास्ट 2-3 years. हमने उतना सोचा नहीं, बिकॉज हम ज्यादा T20s पे फोकस थे एंड टेस्ट पे फोकस थे. ओडीआई क्रिकेट कोई ज्यादा देख नहीं रहा था, बट इट इज क्वाइट कंसर्निंग. मतलब अभी जस्ट वर्ल्ड कप इज कितना 15-16 मंथ्स दूर है, तो और ऐसे देखना तो इट रियली वरीज अ लॉट. तो बट इट्स स्टिल नॉट अ टाइम टू पैनिक. आई मीन ऑब्वियसली you can't question Jasprit Bumrah and co, because our main bowlers, I feel, according to me, are Bumrah and Shami in ODI cricket. So once Shami comes back, we will see those wickets in the power play a lot. I was really disappointed with Bhuvaneshwar Kumar, because I feel that उनके लिए after injury it has been a rough period, and unfortunately I don't see him playing for India anytime soon again, because it was a missed opportunity for him. And after Deepak Char's performance in the last ODI, definitely Char will be preferred over Bhuvaneshwar Kumar in any format for that matter. So I think it could be the end of Bhuvaneshwar Kumar, or maybe he wouldn't be seen in the ODI squad for a long time. So let's end this topic. Next, move to the another topic. So संचित भाई, अभी वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल आ गया है, तो हाउ डू यू सी, आपको मतलब कौन से न्यू फेसेस दिखते हैं इस वर्ल्ड कप? आई रियली होप टू सी न्यू फेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब जो 2021 का स्क्वाड था, आई फील दैट वी हैड अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, स्पेशली स्पिनर्स की अगर हम बात करें, तो आई वांट टू सी लॉट्स ऑफ न्यू फेसेस. बट सिंस कंडीशंस आर डिफरेंट, सो ऑब्वियसली 2 स्पिनर्स 3 स्पिनर्स खिला के कुछ मतलब नहीं है. बट आई रियली वांट टू सी समवन लाइक मोहम्मद सिराज इन दैट वर्ल्ड कप 11, बिकॉज आई फील ही इज एन ओवरऑल इम्प्रूव्ड बॉलर एवर सिंस ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर आरसीबी. लास्ट 2-3 साल से उनका अगर प्रोग्रेस देखे, ही केप्ट ऑन इम्प्रूविंग, not just as a test bowler, but also as a T20 bowler. So I definitely want to see Mohammad Siraj in that squad to Australia, because he's going to love playing in Australian conditions. And also personal opinion hai mera ki I want to see a left-handed fast bowler in that ODI squad, because in that T20 squad, because fast bowling conditions है ऑस्ट्रेलिया में, अगर वेरिएशन मिलेगी, लेफ्ट हैंड पेसर मिलेगी, तो शायद हमें एडेड एडवांटेज रहेगा. बिकॉज इफ यू लुक एट आवर लास्ट परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया, नटराजन जब खेले थे इन Yes, दैट T20 Natarajan. सीरीज, Yes, he did really well. तो मे बी अगर कोई yes. लेफ्ट हैंडेड फास्ट Because बॉलर of मिले. injury, he didn't. Yes, because of injury, he didn't एग्जैक्टली, play. And as well, Chetan Sakaria सकारिया, is also left. Yes, Sakaria also left arm एग्जैक्टली. pacers. But the thing with Chetan Sakaria is that he's a great bowler, but उनके पेस के वजह से शायद he may not be Yes, yes, a first choice yes. player. But maybe IPL is the best place to find out these young talents. So I'm really excited for this IPL, because इससे हमें पता चलेगा कि कौन ऐसे लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर्स है जो शायद खेल सकते हैं in that World Cup. Because the thing with fast bowlers is that कि even if they are playing directly in the World Cup now, it wouldn't be a blunder, because नटराजन को डायरेक्टली उनको खिलाया हमने T20 against Australia, and he did really well. तो left-handed fast bowlers I think are a rare form of fast bowlers, and अगर कोई अच्छा मिलता है, then he should definitely make the flight to Australia.
And Sanchit Bhai, if you look to World Cup groups, then how do you see India in Group Two? Especially, nothing worries India, Pakistan, and Bangladesh and South Africa is there in Group Two. Exactly, and matlab, group is still strong to be very honest. I mean, South Africa to Yes. dekh hi liya. I think they are improving and they will keep on improving in the months to come. Yes. Pakistan, Yes. I think they will be a threat because Australian conditions में Yes. उनके जो bowlers है, they have experience playing in BBL. Yes. Haris Rauf has had a great season in BBL. Shaheen Afridi, ICC Men Cricketer of the Year, so obviously he's going to be a threat again. मतलब कौन भूल पाएगा उनकी spell against India. तो पाकिस्तान and Yes. South Africa will be threat. And let's not forget, Yes. मतलब जो qualifying teams में से है, topper of one of the groups will be coming in our group, in our group as well. So high chances that West Indies will also be in our group. So West Yes. Indies in T20 format, You we can't all judge. know Yes, you can't judge West exactly. Indies by. So I think it still will be a very competitive group, but we could still qualify. मतलब India obviously we will start off as the favorites even after that disaster Yes. 2021 World Cup. We will still be favorites for the 2022 World Cup. But I really want us to see a good start to the World Cup because Pakistan के सामने again पहला match है if I'm not wrong. Then उसके बाद we are playing Yes. Yes. Bangladesh. We are playing Bangladesh right second? No, the Group One. I think West Indies Group One from Okay, qualifiers so one. So once again, मतलब दो strong teams against us, तो we have to win. मतलब पहला match हारेंगे, then again it will give us that pressure of qualifying. तो I really want us to start the tournament on a high. तो जो mistakes 2021 में किए थे with all the squad selection and blunders, Hopefully, we'll repeat it. I feel we Yes. should rectify. And Sanchit Bhai, how difficult is for Rahul Dravid because from becoming coach, then it's a terrible. Virat is stepped down from captaincy, losing in South African side. How do you see Rahul Dravid? आई एम अ ह्यूज राहुल द्रविड़ फैन सो मतलब बहुत दुखी होता है जब ऐसे मतलब न्यू जब राहुल द्रविड़ अनाउंस हुए थे एज द कोच मतलब ड्यूरिंग द Yes, वर्ल्ड कप वी we ऑल were very थॉट कि happy. फाइनली वी वर वेरी हैप्पी मतलब Yes, न्यू एरा रहेगा yes, फाइनली वी कैन फॉरगेट व्हाटएवर हैपेंड yes, बट इट ऑल गॉट yes, फ्रॉम बैड टू वर्स नॉट जस्ट ऑन फील्ड मतलब yes. जो भी ऑफ फील्ड हुआ विद बीसीसीआई एंड विराट कोहली जो And भी मतलब yes, हो रहा yes, था yes. या Yes, कुछ कह and रहे थे it's आप difficult for him also because he's beginning with Indian cricket. He was working with under 19, but boards are very so एग्जैक्टली he's एंड उनको फ्री हैंड भी नहीं मिलता है इन अंडर 19 में एटलीस्ट ही हैड अ फ्री हैंड इन ऑल दिस मैटर्स yes, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन yes, क्रिकेट द सीनियर टीम यू डोंट गेट फ्री हैंड बिकॉज ऑब्वियसली yes, सिलेक्टर्स विल बी सिलेक्टिंग द टीम एंड जो भी हो रहा था पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग उसकी वजह से इट अल्टीमेटली इम्पैक्टेड द टीम कॉम्बिनेशन विद विराट स्टेपिंग डाउन अभी फिर से it's a lot of headache to be very honest so yes, it yes, really I hope कि मतलब he finds a place because Rahul Dravid, I think he also faced a similar issue back in 2007, yes, 6 and 7 जब गांगुली and Greg Chappell का जो भी हुआ था, yes, he was the captain yes, of India that time. तो yes, you really feel unlucky, मतलब very sad for Rahul Dravid, but I really hope कि मतलब ये सब जो भी हो रहा है, at least off the field जो भी controversies हो रहे हैं with yes, Virat stepping down, yes, I think it should stop. जो भी new captain आएगा, I think everything needs to be less toxic for that matter. yes. So thank you very much, Sanchit Bhaiya, for joining with me. So hope you guys enjoyed the video. Like, share, and subscribe to this channel for more updates. Thank you guys for watching. Bye. Cheers, Thank you, cheers, Sanchit cheers. Bhaiya. Thanks.